Hello students, I hope you all are fine. So yesterday we discussed about the characteristics of the equilibrium constants. Means what are the characteristics? It depends on temperature, independent on initial concentration. Okay, if reaction multiplied by 2, then what will happen? What type of change will be there in equilibrium constant? If it is divided by 2, multiplied by 2, means we have done all characteristics. So today we will discuss about some applications of the equilibrium constant. Students, equilibrium constant do not tell about it. It does not depend on the rate of reaction. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता कि स्लो रिएक्शन है भाई हमारी फास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन का रेट क्या है उस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं डिपेंड करती. बट इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ये हमें बताता है अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, अबाउट द इट टेल्स अबाउट extent of the reaction, extent of reaction means reaction हमारी भी कंप्लीट हो चुकी है या फिर रिएक्शन हुई नहीं है या फिर हमारी इक्विलिब्रियम में है. means at which extent reaction take place, it tells about the extent of the reaction. So students, if value of equilibrium constant Kc, okay, if this value is greater than 10 raised to power 3, if this value is greater than 10 raised to power 3, it shows that our reaction proceeds to completion, कि हमारे रिएक्शन है जो वो कंप्लीट मींस मैक्सिमम अप्रोचेस टू द कंप्लीशन, कि रिएक्शन हमारी मैक्सिमम हुई है मींस मैक्सिमम रिएक्टेंट्स ने वहां पर रिएक्ट किया है. अब हमारे पास रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, प्रोडक्ट्स वी आर हैविंग in greater extent as compared to the reactant, means reaction जो है हमारे पास रिएक्शन में अभी रिएक्टेंट्स बहुत कम बचे हैं क्योंकि सभी रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिया, प्रोडक्ट बनाया है. ठीक है, मैक्सिमम रिएक्टेंट्स ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने पार्ट लिया है, जिससे अब हमारे पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो मोर अमाउंट में है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ओके, सो ये वैल्यू अगर Kc की ग्रेटर देन 10 रेज़ टू पावर 3 है तो मींस रिएक्शन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. इट शोज दैट. Clear or not? And students, if reactants means reactants are reacting with each other and they are giving us product, okay, so means reaction is proceeding in forward direction. Reaction is proceeding in forward direction. So it shows that our reaction will be forward. Yes or not? Clear? For example, when hydrogen and oxygen are heated at 500 Kelvin. Then student, it gives us water. And if I talk about value of equilibrium constant, it is around 2.4 into 10 raised to power 47. We need not to learn this one. Okay, around this one. Then students,
its value is this one. This is 10 raised to power 47, means this value is greater than 10 raised to power 3. It shows that this reaction will proceed maximum in forward direction, maximum in forward direction. And here concentration of product will be greater than concentration of the reactant. This point is clear or not? Yes. Concentration of reactant. Any doubt in this point? But students, if value of this equilibrium constant less than 10 raised to power minus 3, then it shows that reaction will take place rarely. मीन्स अगर आपकी Kc की वैल्यू लेस देन 10 रेज टू पावर माइनस 3 है तो रिएक्शन यहाँ पर रेयर ही होगी. मीन्स रिएक्शन के जो होने के जो चांसेस हैं वो बहुत रेयर हैं. क्लियर? इट शोज दैट लाइक दैट here what will happen if reaction is not taking place, means reactants are available in reaction mixture already and we are getting product in very less amount. So student, here concentration of reactant will be greater as compared to the concentration of the product. Clear? So if value of Kc less than 10 raised to power minus 3, तो इससे हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन है, अगर मैं ये कहूं कि वाटर को मैंने फर्दर हीट किया 500 केल्विन पर, तो स्टूडेंट्स ये हमें दोबारा से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसे देखो अगर हम पानी को गर्म करेंगे क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे आपको नॉर्मल कंडीशंस में? इलेक्ट्रोलिसिस से लेते हो ना. इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करवाते हैं तब आप बादल, योर अटेंशन शुड बी हियर ओनली. यस, देन वाटर का अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिल जाती है. बट क्या जनरल हीट करने से, पानी को हम डेली बॉईल करते हैं, ये इसकी स्टेट कन्वर्जन भी होती है, बट क्या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होते हैं? नो. तो जो हमारी रिएक्शन है वो कैसी है? रेयर है. ओके, तो यहाँ पर जो Kc की वैल्यू है वो अराउंड 10 रेज टू पावर माइनस 48, मीन्स ये माइनस, ओके, कम ज्यादा हो सकती है बट ये नेगेटिव है और 10 रेज टू पावर माइनस 3 से भी क्या है? कम है. ओके, सो ये जो है हमें ये क्या दिखाती है कि ये रिएक्शन जो है ये रेयर है, जिससे रिएक्शन ही नहीं हुई तो आपके पास रिएक्टेंट्स ही होंगे, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट बहुत ही कम अमाउंट में है. क्लियर और नॉट? देन स्टूडेंट्स, इफ Kc value lies between 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power 3, then student it shows that our reaction in reaction mixture, reactants and products both will be present at same extent. Reactants and products both will be present at the same extent. Clear or not? So students, we can say if value of Kc greater than 10 raised to power 3, then reaction will be forward. Reaction will proceed in forward direction. If Kc
is equal to exist between 10 raised to power minus 3 to 10 raised to power 3. It shows equilibrium because here reactants and products both are present in reaction mixture at same extent, so it shows the equilibrium. Clear? If Kc value less than 10 raised to power 3 means reaction will be rare. Reaction will be rare. Okay. So students, here it shows the backward. It shows the backward reaction. Clear or not? From this example you can see. Here if we want to break this one, okay, it cannot do, it is rare. But if we combine this one, then it undergoes to the completion. Clear or not? Means this reaction can proceed in backward. Clear or not? So students, you will learn these 3 points only. If Kc greater than 10 raised to power 3, then it shows forward. If 10 raised to power 3 minus 3 2 plus 3, then equilibrium. If less than 10 raised to power minus 3, then it shows the backward. Clear or not? Means it tells about the extent of reaction कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी भी मैक्सिमम रिएक्टेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या रिएक्शन हमारी रेयर है कि भी रिएक्शन होगी नहीं होगी तो बहुत कम अमाउंट में होगी या फिर इक्विलिब्रियम मींस 50-50 जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी क्या किस में रहेगी इक्विलिब्रियम में दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहेगी सेम रहेगी तो ये भाई रिएक्शन मिक्सचर में कितना रिएक्टेंट प्रेजेंट है कितना प्रोडक्ट प्रेजेंट है उसके एक्सटेंट को कौन बताता है Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एनी डाउट इन दिस वन यस Then students, equilibrium constant also tell us about direction of reaction. About direction of reaction. Students, we write equilibrium constant for an equilibrium reaction like this. If this is a reaction, here concentration of reactant and product both are constant, which shows the equilibrium. So if we write equilibrium constant for this one, product of concentration of product raised to power their stoichiometry coefficient divided by product of concentration of reactants raised to power their coefficients. Then students, केवल ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्विलिब्रियम की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो हम इक्विलिब्रियम पर ही रखें जहां पर दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है जहां कांस्टेंट होती है उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा ही इक्विलिब्रियम पर ही केवल कांस्टेंट की वैल्यू लिख पाते हैं वे इक्विलिब्रियम से पहले या बाद में मींस किसी भी कंसंट्रेशन पर इफ वी वांट टू राइट कांस्टेंट वैल्यू एट एनी कंसंट्रेशन ओके एट एनी टाइम at any point of the reaction okay then also we can write clear or not but that is denoted by QC equilibrium this is known as the reaction quotient this is not as the reaction quotient निकालेंगे सेम वैसे उस टाइम पे रिएक्टेंट की कितनी प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट सेम वैसे निकालेंगे बेटा उनकी कितनी पावर उस टाइम तक जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम तक उनके कितने मोल्स यूज हुए हैं क्लियर ऐसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। सेम वे से लिखेंगे, लिखने का तरीका जो हमारा है मेथड है वो सेम होगा। यहाँ पर हम जिस पॉइंट की बात, जिस इंटरवल की बात हम कर रहे हैं उसी इंटरवल पर हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को देखना है और कितने मोल्स यूज हुए हैं वो पावर्स में लिखने हैं। बट वे ऑफ राइटिंग इज सेम। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ओके, मीन्स इन सेम दिस, ये जो है हमारा जो ये कांस्टेंट है ये कब के लिए है? ये कांस्टेंट है कि जब हमारी रिएक्शन 50-50 है। ओके, भी कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, ये उसके लिए है। बट जो ये है कि मान लो अभी रिएक्शन 50-50 हुई नहीं है, अभी मान लो हमने जस्ट इनिशियल में 0 थी, इनिशियल टाइम 0 था, ठीक है, बट हमने आफ्टर 1 आवर रिएक्शन को देखा या फिर आफ्टर 30 मिनट्स, क्लियर। बट रिएक्शन का जो कंप्लीशन टाइम है हमने मान लिया कि भाई वो 4 आवर्स है, बट हम रिएक्शन को आफ्टर 1 आवर देखते हैं तो ओनली 25% की वहां पर हुई ना रिएक्शन। अभी हमारे पास कितना बचा है कंसंट्रेशन? 75% और भी है। तो हम 50-50 पर ना करके वो चीज उस सेम कंसंट्रेशन पर करेंगे और कितने मोल्स यूज हुए हैं। Clear or not? Means we can calculate equilibrium constant at any concentration of reactant and product. Then our constant is known as the reaction quotient. Then our constant is known as the reaction quotient. Then students, sit properly. Let us consider you can see students at equilibrium, because constant we are writing in same way. Okay, equilibrium constant is Kc. If Kc and Qc, because we are talking about concentration only, if Qc and Kc both are equal, it shows equilibrium. It shows equilibrium. But if value of Qc is less than value of Kc, this one is Kc na, then what will happen? This Qc will want to reach at value of Kc. Okay, अगर हमारी जो Qc की वैल्यू है वो Kc से कम है तो ये क्या करेगा? इस वैल्यू को रीच करना चाहेगा, पहुंचना चाहेगा यहां तक। तो ये कहां जाएगा? इसको ऊपर की तरफ, मींस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। तो रिएक्शन कैसी होगी? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। क्लियर? बट अगर मान लो आपकी बट अगर मान लो आपकी जो Qc की वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू Kc। क्लियर? तो अब क्या करेंगे? इसको तो Kc तक पहुंचना है, इक्विलिब्रियम तक।
तो उसके लिए रिएक्शन को कहाँ आना पड़ेगा? अपोजिट मीन्स बैकवर्ड, मीन्स कहाँ आना पड़ेगा? बैकवर्ड. So students, if QC greater than Kc, then reaction will be backward. Means equilibrium constant also tell us about the direction of reaction. Reaction will be forward, reaction will be backward. Okay, we will see if QC less than Kc. Okay, if reaction constant less than equilibrium constant, then reaction will proceed in forward direction. Clear? If both QC and Kc are equal, then it shows equilibrium. Means reaction will not take place in any direction. It is already in equilibrium. Clear? Then, if QC is greater than Kc, then reaction will take place in backward direction. Any doubt in this one? So students, from here, you will keep in mind these points only. First, on Kc, it shows forward and it tell about completion of reaction. Completion of reaction. It tell about equilibrium, both concentration will be in same extent. It tell about backward. And reaction will take place rarely. And here, if QC greater than Kc, then it tell backward. Directly these are the questions, beta. In numerical problem also, you should know about that. Okay, so in this way, it tells us about the direction and extent of reaction. Any doubt in these 2 points? Okay, so that's all for today. Thank you. Have a nice day.